जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम। जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेफ टॉक्स। दिस इज आदि अचिंत। आइए समझें जियोपॉलिटिक्स को एक भारतीय नजरिए से। So India has a mindset where it hits, it punches below its weight. We have to punch not above our weight. We have to punch not below our weight. We have to increase our weight and punch the post. ये हमारा सिद्धांत है, हम घर में घुस के मारेंगे। You know, victims of terrorism do not sit together with perpetrators of terrorism to discuss terrorism. नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेफ टॉक्स। Victims of terrorism may not sit together with perpetrators of terrorism to discuss terrorism, but terrorist enabling countries वो बैठती हैं जरूर एक ही देश में और टेररिस्ट कंट्री के ऊपर लड़ती हैं। तो यहाँ पर हम कुछ आज बात करेंगे बड़ी अजीब सी कहानी की। राजा साहब जो हमारे साथ हैं, नमस्कार जी। पहले तो वेलकम टू द शो। नमस्कार सर, थैंक यू फॉर हैविंग मी वंस अगेन। एक आर्टिकल प्लेजर्स माइन सर। इन्होंने एक आर्टिकल लिखा है। आर्टिकल में इनका कहना है कि अभी जो लड़ाई होगी पाकिस्तान में, बाकी सब तो टीएलपी, पीएलपी, टीटीपी, टीआरएफ, पता नहीं कितने कितने ग्रुप बने हुए हैं इनके वहां पर, लेकिन राजा साहब बोलते हैं यार लड़ाई होने वाली है चाइना और अमेरिका के बीच में, पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान के लिए। एक्चुअली पाकिस्तान भी बहुत बड़ी चीज बोल रहा हूँ, ही इज सेइंग ग्वादर के लिए। तो जरा समझें ये क्या नया ट्विस्ट है, क्योंकि जो हमारा लॉजिक है, आई टेक 30 सेकेंड्स मोर इफ यू डोंट माइंड, कि साहब अमेरिका ये चाहेगा चाइना को जरा अंदर आने दो, पुल हिम इनसाइड एंड देन स्मैश हिम टू बिट्स। आई वुड डू दैट इफ आई वाज एनीबडी एल्स। अमेरिका अभी क्या करता है वो तो वहां से देखते हैं, बट लेट्स एनालाइज। नमस्कार वंस अगेन, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। कहाँ से शुरू करें? आप कैसे से शुरू करते हैं कि कहाँ पे कौन किसको खींच रहा है? यार सो हाँ, सी उससे स्टार्ट अगर आप सो एससीओ को अगर आप देखोगे ना, जो एससीओ समिट था, तो उन्होंने पाकिस्तानियों ने बड़ा वेलकम किया था चाइनीज को, बट देयर वाज अ बैकड्रॉप टू दैट स्टोरी एंड द बैकड्रॉप वाज सीपेक। क्योंकि इन्होंने एक बहुत लंबा चौड़ा नोट बना के एक विश लिस्ट बनाकर भेजी थी उससे पहले चाइना को कि सीपेक 2 हमें स्टार्ट करना है और सीपेक 2 में हमें ये करना है, वो करना है। जितने भी बिग टिकट प्रोजेक्ट्स थे वो सारे प्रोजेक्ट्स चाइना ने होल्ड पे रखे हुए। सो अगर आप वो देखोगे कि व्हाट दे हैव गिवन देम, तो उसमें दे आर वेरी लो, यू नो, नॉट इवन अ लो हैंगिंग फ्रूट, अ लो वैल्यू फ्रूट उनको दिया है, व्हिच इज बेसिकली डंकी एक्सपोर्ट मीट है उसमें, राइट। बाकी छोटी छोटी जो उसमें उन्होंने उनको दिया वो दिया। जो मेन उसमें जो बिग फिश है, वो है एक तो ग्वादर पोर्ट का है टोटल कंट्रोल, एक उसमें ओरमारा पोर्ट करके है जिसपे चाइनीज वांट टू सेट अप अ शिपयार्ड, रिपेयर फैक्ट्री और सबमरीन्स की पेंस सेट करना चाहते हैं। तो वो उन्होंने सारा जो है होल्ड पे रखा है। अच्छा, वो हाईवे जो ये बाईपास करना चाह रहे थे, जिसको वो M1 के साथ जोड़ना चाह रहे थे कराची से, उसका बाईपासिंग का था, वो उन्होंने होल्ड पे रखा है। पावर प्रोजेक्ट 2 हैं बलूचिस्तान में जो अभी तक होल्ड पर है, जिन पे जो कोल्ड फायर है, और इन सबको उन्होंने लिटरली पानी डाल के होल्ड पे रख दिया था। सो दिस वाज देयर इनिशियल इन्वेस्टमेंट वाज अबाउट $2 बिलियन, व्हिच द पाकिस्तानी जो उनसे मांग रहे थे कि दूसरा स्टार्ट करने के लिए $2 बिलियन का इन्वेस्टमेंट जो है वो स्टार्ट होगा, तो वो उन्होंने उनको दिया नहीं। सेकेंड थिंग थी कि नेगोशिएशन हार्ड हुई थी कि व्हाट नेक्स्ट फॉर चाइना, बिकॉज द चाइनीज कंपनीज अभी भी आप देखोगे, एक तो पाकिस्तान ने जो IMF के साथ लोन का एग्रीमेंट किया है, अगर आप उस IMF के एग्रीमेंट को देखोगे तो IMF के एग्रीमेंट से कहीं ना कहीं पाकिस्तान सीपेक से इन्वेस्टमेंट नहीं ले सकता, बहुत मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि अगर आप देखोगे कि इनका जो डेप्ट रोल ओवर है या इनका जो SCZA बनाने की बात करते हैं विद इन ग्वादर या विद इन सीपेक में, तो उसमें IMF ने सीधे बोला है कि कोई नो फर्दर SCZs विल कम अप इन पाकिस्तान, राइट, नो रोल ओवर्स विल हैपन। कोई आप ये नहीं कर पाओगे, इंटरेस्ट पे आप इंटरेस्ट माफ नहीं कर पाओगे। काफी उसमें काफी स्ट्रिक्टनेस है, वो पूरा दैट्स अराउंड 100 पेज डॉक्यूमेंट। तो उससे ये
चाइना के लिए प्रॉब्लम तो हो गई। अब प्रॉब्लम क्या हो गई, बेसिकली पाकिस्तान के लिए प्रॉब्लम हो गई, क्योंकि पाकिस्तान का अगर आप देखोगे आईएमएफ का करने के बाद भी दे हैव फॉल्टर्ड ऑन 2 एग्रीमेंट्स। एक टैक्स रिटर्न 99% उनका जो है एफबीआर का वो टारगेट उनका नहीं हुआ, एक 53% ही उनका हुआ है जिसमें उन्होंने सब्सिडीज दी हैं, तो 53% कट गया, राइट। तो कहीं ना कहीं आईएमएफ के लोन पर भी पाकिस्तान का जो है वो पैर जो है वो डगमगा रहा है, वो इतनी स्ट्रिंजेंट कंडीशंस जो है वो फॉलो नहीं कर पा रहे। दे हैव टू ब्रिंग द ट्रेडर्स अंडर द एम्बिट ऑफ टैक्स पेइंग, वो उनसे हो नहीं रहा है, वो कर नहीं पाएंगे, बहुत मुश्किल है उनके लिए। तो अब चाइनीज के साथ जो प्रॉब्लम ये है कि द चाइनीज आर सेइंग नाउ कि वी विल टेक ग्वादर ओवर, बिकॉज देखो आई हैव ऑलवेज सेड दिस दैट ग्वादर इज टू बिग फॉर चाइना टू फेल, बिकॉज ग्वादर इज द फ्लैगशिप फॉर बीआरआई। अगर चाइना ग्वादर छोड़ देता है, या चाइना जो है उसका ग्वादर में जिस हिसाब से वो सीपेक की इन्वेस्टमेंट कर रहा है उसका वो स्ट्रैटेजिक उसकी वैल्यू उसको नहीं मिलती है, देन एसेंशियली हिज होल बीआरआई थिंग कोलैप्सेस। दूसरा, चाइना के लिए अब बहुत इंपॉर्टेंट हो गया ग्वादर पोर्ट, अगर आप देखोगे जियो स्ट्रैटेजिकली भी, जियोपॉलिटिकली भी, क्योंकि if you look at what is happening in Bangladesh, if you look at what is happening in South China Sea, if you look at the recent जब अभी चाइना ने ताइवान पे एक्सरसाइज किया वो 2 दिन का, and then the American vessels sailed through the Strait of Taiwan, so that is becoming a problem for China. Now China wants its foot in the Middle East, क्योंकि इनकी जिबूती में एक बेस है, right? The Chinese have a base in Djibouti. They want a base on the other side of the globe as well. They want to have a base this side of as well, so they can reach far into the Arabian Sea and then get into the Mediterranean side of the sea. So वो एक strategic calculation है जो चाइना की है. And the Chinese have told Pakistanis very carefully. If you analyze क्या, उसने तो सीधे ही बोल दिया कि जो पाकिस्तान का फाइनेंस मिनिस्टर है कि वी आर नेगोशिएटिंग डेब्ट रोल ओवर, की इंटरेस्ट जो हमारा है उसको हम रीनेगोशिएट करना चाहते हैं, क्योंकि आईएमएफ ने बोला रीनेगोशिएट करो काफी इंटरेस्ट। तो बट चाइनीज हैव टोल्ड देम, उसने कहा कि 3-4 साल लग जाएंगे इनको करने में। सो दैट इज अ वेरी क्लियर साइन कि द चाइनीज आर नॉट वेरी हैप्पी विद द पाकिस्तानीज। सो पाकिस्तानीज आर सेलिंग अ चूरन, saying कि no, China understands that what is happening in Balochistan, and this is the Pakistanis talking about it, we are not. China understands what happening in Balochistan and Khyber Pakhtunkhwa is a doing of America and India. So if the Pakistanis are directly saying now, then they are accepting that the Americans are actually playing a game within Pakistan. कि इसके पीछे जो है फॉरेन पावर्स है। फॉरेन पावर्स पहले तो सीधे होता था ये राह नहीं किया, आज पाकिस्तान का टोन चेंज हो गया। आज वो ये नहीं कहते राह नहीं किया, वो कहता है फॉरेन पावर्स ने किया। फॉरेन पावर में कोई भी हो सकता है, राह भी हो सकता है, सीआईए भी हो सकता है, राइट? ये बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज है। पाकिस्तान क्या हमेशा वो देखो आप, उनका एक जो नैरेटिव रहता है वो सुपर इम्पोज करने की कोशिश करते हैं। बाकी भी बहुत सारी एजेंसीज हैं, जैसे मैं तो काफी टाइम से बोल रहा हूँ, सीआईए हैज अ मोर डीपर हैंड इन ब्रेकिंग अप ऑफ पाकिस्तान देन इंडिया डज। एब्सोल्युटली हैंड है, इंटरेस्ट है, और उनका काफी पेनिट्रेशन है। पेनिट्रेशन भी है, सोसाइटी लेवल पे ज्यादा पेनिट्रेशन है, और फौज में तो बहुत पेनिट्रेशन है, राइट? सो द चाइनीज सिंपली टोल्ड द पाकिस्तानीज then let's set up this joint protection force which we have always discussed. Now a very good source of mine told me, what makes you think that they are already not in Gwadar? And I said, what do you mean? Americans or Chinese? The Chinese. So I said, what do you mean? And he was very clear. He said, maybe the inner ring which is there near the Gwadar port is manned by the Chinese. वो तो पता ही है, वो जो that boundary, if you remember, the BLA had gone hit that boundary wall. हाँ, yes. So I told him that. I said, यार, ये तो पुराना है. This has been hit, but then you have not been able, Pakistan has not been able to protect them. So he said yes, and that is where the Chinese are putting a lot of pressure on Pakistani, saying that now we need to expand this whole circle. ये जो हमारा immediate circle है, इसको हमको expand करना होगा. We will have to literally build walls. So there will be one parameter which will be like a,
रेडियस ऑफ 50 किलोमीटर और 60 किलोमीटर जो इनर पैरामीटर होगा, फिर आउटर पैरामीटर होगा, फिर उसका आउटर पैरामीटर होगा, बट ये हमको जॉइंट फोर्स के थ्रू करना होगा. Now the Pakistanis told them कि नहीं नहीं, अब Pakistanis are weighing off the pressure, saying नहीं आप एक काम करो, give us the money, we'll buy these bomb-proof vehicles and armored vehicles, and we will do that, all that nonsense, because the Pakistanis want to milk money, nothing else, right? So but Chinese have not accepted that. The Chinese have said we already gave you the money, so if you have not been able to protect it, it's time for us to take it. And see, yet देखो चाइना का अगर आप कहीं भी देखोगे ना, चाइना is like a, I'm sorry to use that word, but it's like a baniya, very shrewd in business. It's not gonna give freebies. It's not America, it is not IMF कि ठीक है यार दे दिया, 5-10 बिलियन डॉलर दे दिया, 15 बिलियन डॉलर दे दिया, no issues, we can leverage it in a different way. The Chinese are very very shrewd in this sense, and they know that their investment is sinking in Gwadar. Now there is two things. One, एक तो ये ग्वादर का इनर पोर्ट ढूंढ रहे हैं, दूसरा आपको याद होगा तीरा वैली के पास. तीरा वैली के पास चाइनीज ने पाकिस्तानियों को भगा दिया. The Chinese and the Taliban forces are managing that place. तीरा वैली में? हाँ, तीरा वैली के नीचे. तो वहां पर और आपका जो ये क्रॉसिंग है गिलगित बल्तिस्तान का, वो सारा जो है that is now jointly managed by the Pakistanis and sorry, Wakhan के पास, not Tira, Wakhan के पास. The Wakhan is now being managed by I'm so sorry. Wakhan is now being managed by the Taliban and the Chinese jointly. The Pakistanis have been now see, if you see Chitral, sorry to interrupt you, but if you see Chitral, चित्राल का जो रीजन है वहां पे तो ऑलरेडी बैठे हुए हैं ये टीटीए वाले, तो काफी टाइम से बैठे हैं. टीटीपी है. हाँ नहीं, मैं गलती से तीरा बोल गया, मैं वखान कॉरिडोर की बात कर रहा था, वखान की बात कर रहा था. एक सेकंड, जरा मैप एक बार आप पुल कर लो. 1 second guys, just let's pull up the map because ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा साहब ने बोला है. Let's pull up the map so that we can talk about exactly the region. Now पहले जस्ट एज एन इंट्रोडक्शन मैं आपको बताऊं, ये अगर आप इसको थोड़ा सा पुल आउट करोगे, ये जो एरिया यहाँ पर लिखा है ना चित्राल, दिस इज हियर, ठीक है. एंड इफ यू सी दिस इज नूरिस्तान के पास है, वखान के पास है, और ये आता है आपका गिलगित बाल्टिस्तान वाला रीजन. हाँ, ये आपका जो रीजन है. हाँ, ये जो एक रोड जा रही है ना, दिस इज द सिंगुलर रोड दैट पाकिस्तान हैज टू गो इनटू गिलगित बाल्टिस्तान अपार्ट फ्रॉम दिस कोहिस्तान रोड. ठीक है. और ये वाली जो मनशेरा से रोड जाती है ना, यहाँ पर इनको काफी प्रॉब्लम होती है क्योंकि द टेरेन इज रियली बैड हियर. ओके, नाउ इफ यू सी ये खुरमत वैली जो लिखा हुआ है यहाँ पर, इधर पे आके ये चित्राल के एरिया के ऊपर ये NH-45 है, इसको ऑक्यूपाई कर रखा है टीटी तहरीके तालिबान ने. अब वो TTA है, TTP है, फर्क तो पड़ता नहीं, द सेम डैम. नहीं वो एक्चुअली अफगान तालिबान है. हाँ, तो TTA है. चक्कर क्या है, अगर आपका ये ब्लॉक हो रखा है तो आपकी मेन रोड ब्लॉक हो रखी है गिलगित बाल्टिस्तान जाने की. देन यू हैव टू यूज ईदर दिस कोहिस्तान रोड व्हिच गोज डाउन एंड देन गोज नॉर्थ, तो ये लंबा रास्ता पड़ता है, या फिर आप इधर से जाओ, ये वाला जो रास्ता है ना, यहाँ पर भी ये जयपुर एयरपोर्ट एंड ऑल दैट नंगा पर्वत के पास से आप जाते हो. दिस इज नॉट अ वेरी इजी रूट. ठीक है, ये नंगा पर्वत वाला रीजन जो है ये बहुत खराब है. इट्स नॉट अ वेरी इजी रूट. तो ये आपको समझना पड़ेगा थोड़ा रीजन. एंड हाँ, सो यू वर सेइंग दिस एरिया नाउ चाइनीज हैव कम टू दिस एरिया, या द चाइनीज एंड द अफगान तालिबान आर जॉइंटली मैनेजिंग दिस एरिया. ओके, because this is where they thought the main problem would be. If the Pakistanis come here, then the Afghan TTP or the Afghan Taliban and Pakistanis will clash. So they have told the Pakistanis to bugger off because they want to secure this whole corridor there. So the Chinese, this whole thing goes into the Chinese hand then. So this whole thing is already going through the Chinese hand. The Chinese are already manning this area. The Chinese and the Afghan Taliban on this side, the Chinese on this side are manning this area. So what they've done is basically expanded the Wakhan. So they have expanded the Wakhan. इसको जरा थोड़ा सा सैटेलाइट में देखते हैं so that guys can realize how bad this damn terrain is. ठीक है, ये it's terrible this place. हाँ, ये बहुत गंदी terrain है and it's very very bad. जो आपको मैं पहले रोड दिखा रहा था, ये देखो कोहिस्तान की, you have to go through this damn valley. It's a very very bad road. ये देखो, यहाँ से इसके अंदर जाना पड़ता है. ये बहुत बहुत हालत खराब होती है इसमें जाने में. ये चिलास
जगोत, गिलगिट एंड यू हैव टू गो अप। ठीक है, यहाँ पर एक जगह का नाम है जयपुर, वो भी मैं दिखाता हूँ आपको, इट्स समवेयर हियर। आई एक्चुअली स्टडीड दिस मैप, ये रहा On the जलीपुर, core. नॉट जयपुर, जलीपुर। ये जलीपुर इज द वन ऑफ द मोस्ट लैंडस्लाइड प्रोन एरियाज इन द वर्ल्ड। ठीक है, यहाँ रोड ऐसे ब्लॉक होती है, इट्स नॉट फनी। तो So ये आपका एरिया है। हाँ जी, ये जो आप जिस पे आप पॉइंट कर रहे हो ना, ये वाला एरिया जो है जिसका आप ये दिखा रहे हो, ये जो जहां आपने टीटीए का बता रहे हो, सो ये जो एरिया है दिस द चाइनीज हैव ऑलरेडी सिक्योर्ड. So if the Chinese have already secured this, that means they are coming into piecemeals. The biggest challenge the Chinese are going to face is when they reach Khyber Pakhtunkhwa and when they reach Balochistan. और खैबर पख्तूनवा कितना दूर है? ये दीर से नीचे शुरू हो जाता है पूरा एरिया। डीर के नीचे वो शुरू हो जाता है, सो डीर के ऊपर तक दे आर होल्डिंग इट विद द तालिबान, राइट? दे आर आल्सो टॉकिंग टू द तालिबान, दे आर आल्सो टॉकिंग टू बीएलए. The Chinese are directly now negotiating with BLA. They have started negotiations with BLA. सवात is right here, ऐसे जैसे बोलते हैं ना, स्वात नहीं बोलते, सवात हाँ, बोलते हैं। सवात यहाँ से स्टार्ट होता है इनका ये जो क्या नाम है, मर्दान शरदान, ये तो सारा उसी का ही है, खैबर पख्तूनख्वा का ही है। तो बेसिकली गाइस ये जो आप देख रहे हो ना N95 जो आ रही है, अगर आप सवात से सीधा लाइन खींचो ये M14 तक, दिस वुड बी द काइंड ऑफ, आई मीन टेढ़ा मेढ़ा है बीच में, बट इफ यू पुल अ लाइन स्ट्रेट फ्रॉम हियर, ये कलाम से लेकर, अगर आप कलाम से अगर आप लोगे, बट ये अभी विदाउट थ्रू मनशेरा आती है, अगर आप देखोगे कि मनशेरा के थ्रू, मनशेरा से निकलकर फिर ये सीधे आती है, राइट? तो ये सीपेक का रूट है. सो नाउ द चाइनीज आर डायरेक्टली टॉकिंग टू बीएलए. They have initiated contact with them and they are already talking to them. They are looking for some guarantees. बीएलए तो अमेरिका का है। हाँ, तो चाइनीज हैव रियलाइज्ड कि पाकिस्तान के बस की नहीं है, तो चाइनीज हैव ऑलरेडी स्टार्टेड टॉकिंग टू देम एंड द अमेरिकन्स आर आल्सो अवेयर ऑफ इट. तभी इन्होंने अभी महरान बलोच को वो बिल्कुल बंद कर दिया, उस पर टेररिज्म का वो लगाकर, दे आर प्लीजिंग द चाइनीज. अब आप देखो बड़ी इंटरेस्टिंग सी गेम चल रही है पॉलिटिकली भी. शहबाज इज इन टर्की, नवाज इज गोइंग टू यूएस, जरदारी इज गोइंग टू चाइना. 7 तारीख को जरदारी चाइना जा रहा है. ओके, ठीक है, क्योंकि नवाज एंड शहबाज आर टू ब्रदर्स हु हैड गिवन अमेरिकन्स द गारंटी दैट वी वुड बी वाचिंग योर इंटरेस्ट. एंड जरदारीज आर hedging their bet, the Bhuttos are hedging their bet towards the Chinese to counterbalance Nawaz. I already told you that their life is over in Pakistan. The brothers' period is almost over. They'll be gone very soon. राइट? तो ऑलरेडी जो वो पुल एंड प्रेशर्स जो हैं यूएस और चाइना के पॉलिटिकली भी, वो भी हमको ऑन द सरफेस देखने शुरू हो गए हैं कि कौन कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है, क्या कोशिश कर रहा है. सो बट इसमें सिग्निफिकेंट यही है कि एक तो चाइनीज हैव ट्राइड टॉकिंग टू बीएलए, बट द बीएलए हैज नॉट गिवन. बीएलए ने, अगर आपको याद होगा, आज से 2 हफ्ते पहले एक स्टेटमेंट दिया था, एंटी चाइनीज नहीं, एक एंटी चाइनीज दिया था और ये बोला था कि स्टॉप टॉकिंग टू पाकिस्तान, टॉक डायरेक्टली टू अस. दे हैड गिवन देम अ फीलर, राइट? सो दैट फीलर वाज बेसिकली कि देयर इज दैट वी आर टॉकिंग. That was a tacit approval of saying that the Chinese have approached us and we are talking to the Chinese. Right? Now the problem would be that what can the Chinese promise the BLA? Nothing. Money, maximum. Maximum. BLA will not take the money. They're not interested in money. They're interested in autonomy. गोल्ड शोल्ड बेच के वो वैसे ही कमा लेते हैं. They are interested in autonomy, which the Americans are promising them. So the Pakistanis are caught. And Pakistanis are deeply caught. See, in this game, one thing I know, Americans are better. थोड़े इनका, they are better. They play a long game. They play a very long game. They know how to play this game. Right? I hope the Chinese are not getting trapped. The Chinese might be getting trapped. कि ठीक है, थोड़ा सा बैकफुट ले लो यहाँ पर. Get them inside. इनको आने दो.
बीएलए वालों को बोला अच्छा तुम बात करो, कोई बात नहीं, विल गिव यू मोर मनी देन ये जितने भी तुमको दे रहे हैं उनसे ज्यादा देंगे तुमको। नहीं, वो तो उनको ऑटोनॉमी प्रॉमिस कर रहे हैं ना, देयर गिविंग अ लार्जर पाई टू देम, दे हैव शोन देम अ बिगर चॉकलेट, अ बिगर कैंडी, व्हिच दे हैव शोन टू द खैबर पख्तूनख्वा गाइस आल्सो। तो इफ यू वो उनको रिमेम्बर, बिगर कैंडी दे रहे हैं। इफ यू रिमेम्बर 2-3 महीने हमने पहले बात करी थी द ग्रेट गेम ऑफ पाकिस्तान। सो इट इज जब एग्जैक्टली कमिंग, आई वाज कमिंग टू दैट, मैं बोलने ही लगा था कि हमने 3 महीने पहले डिस्कस किया था, और ये एग्जैक्टली वहीं पे आ रहा है जहां पर हमने इसको डिस्कस किया था। इट इज एग्जैक्टली फॉलिंग इनटू द सेम, पीसेस आर फॉलिंग इनटू दैट पजल ओनली, फिटिंग दैट पजल कंप्लीटली। एग्जैक्टली नाउ मेरा सवाल आपसे ये बनता है, बीएलए वालों की जो, अगर आप उनकी वो टेलीग्राम चैनल्स एंड इनमें जाके देखो, इनकी जो कॉन्वर्सेशंस आर नॉट वेरी प्रो चाइना एट ऑल। तो अपना जो इंटरनल नैरेटिव बना के बैठे हैं ये लोग, इट इज वेरी एंटी चाइना। तो अगर ये इट चाइना के इज साथ जाके बैठते हैं तो इनके अपने लोग मारेंगे इनको। एग्जैक्टली, बट उसके अंदर, इनके चैनल्स के अंदर एंटी अमेरिकनिज्म इतना नहीं है। देयर इज अ रीजन फॉर दैट, हम्म, बिकॉज द चाइनीज आर इनटू सीपेक फॉर व्हाट 12 इयर्स, हाँ 2014 से ही है ना, हम्म, 2014 2015 से, राइट? ऑलमोस्ट 8 9 साल हो गए, 10 साल होने वाले हैं। उन 10 सालों में बलोचों को कुछ नहीं मिला, हम्म, right? 0/0, nothing. The Balochis don't trust the Chinese because the Baloch don't trust the Chinese because Baloch knows that for last 10 years they have been milking them their resources. One, two, the Chinese also, if you look at the way they are exploiting whole Balochistan resources, एक तो वो है, दूसरा चाइनीज जो आप ग्वादर पे आप देखोगे कि उनके शिप्स हैं, वो ट्रॉले लेकर ऑलरेडी वो ट्रॉलर्स ऑपरेट करते हैं वहां पर, ठीक है? दे यूज दोज फिशिंग ट्रॉलर्स देयर, वो हाँ। फिशिंग ट्रॉलर्स भी जो है, दे आर दे Please आर go on. हिटिंग देयर। I'm just हाँ, kind of, श्योर, मेरा mic is misbehaving, so I'll just refix that. Please go on. गुड। सो एक और दूसरा उनकी लाइवलीहुड पे वो हिट कर रहे हैं, क्योंकि वो ट्रॉला जो है वो डीप सी फिशिंग करता है, डीप सी फिशिंग करके निकालता है, इट्स हिटिंग देयर लाइवलीहुड, राइट? सो सिंस सीपेक आया है, the Pakistanis have exploited Baloch. They have become more regressive on Balochistan. The Chinese have completely, they have very bad experience of the Chinese. And the Americans are promising them liberation. The Americans have not exploited them in any other way. They are just promising them liberation. So it's very natural, मैं कहूँगा, कि they will lean more towards the Americans than they will lean towards the Chinese. इस सूरत, because Chinese are not trustworthy. ना उनकी इकोनॉमी में चाइना को फर्क पड़ा, ना जॉब्स मिले, इंसर्जेंसी ज्यादा बढ़ गई, लाइवलीहुड पे बलोच का हिट हुआ, जमीनें बलोच की गई, पानी पीने के लिए बलोच के पास नहीं है, बिजली बलोच के पास नहीं है, सारा मछली ले गए रिसोर्स सारी, मछली तो मछली अभी भी ले, वहां से चलाते हैं। हाँ मछली ले जा रहे हैं सारी, तो वहाँ, so Baloch have no reason to talk to China or no reason to trust the Chinese. मैं वही बोल रहा हूँ, I mean, does this mean that ये बलोच are now part of the American game, जहां पर चाइनीज को ये घुसाएंगे और फिर ठोकेंगे? दो चीजें हो सकती हैं। देखो, बलोच में भी आप देखो ना, बीएलए के भी बहुत से फैक्शंस हैं, राइट? सो देयर वुड बी say to China, okay, ठीक है, and then there would be some factions who will say कि ठीक है, अमेरिका को okay, fine, we'll do this. That is what it can end up to. But अगर आप overall strategically देखोगे, I don't think China has, either the Chinese replaced the Americans completely, but China will never give autonomy to Balochistan and to Khyber Pakhtunkhwa because उनको पता है कि ये आकर हमारे, they will not be able to control it, right? The Americans are sitting too far to muddle into their affairs, everyday affairs, except that they want them to muddle into Pakistan and into China. But पाकिस्तान का नेक्स्ट 5 years का $110 billion का पे आउट है, आएगा कहां से? In next 5 years they have a payout of $110 billion. और every rollover जो इनका होता है उस पे इनका बढ़ जाता है इंटरेस्ट। चाइनीज को अगर इस बारी किसी कंपनी को इन्होंने 1 million देना है, तो वो अगले साल 1.5 million बन जाता है। सो चाइनीज डेट रोल ओवर इज नॉट फ्री ऑफ कॉस्ट ना, उसमें कॉस्ट एसोसिएटेड है।
सो चाइना नोस कि हम पैसे रिकवर नहीं कर सकते, हमको ये पार्ट लेना ही पड़ेगा. सो चाइनीज विल वेरी स्लोली मूव इनटू बलोचिस्तान, वेरी स्ट्रेटेजिकली, वेरी स्लोली. द अमेरिकन्स विल वेट. बट इतना इजी तो नहीं है यार उनके लिए घुसना. इजी नहीं है, बट जितना पाकिस्तान इकोनॉमिकली वीक होता जाएगा, जितना पाकिस्तान, देखो अगर आईएमएफ का नहीं होता है जैसे पाकिस्तान चल रहा है, अगर नेक्स्ट लेट्स से 3 महीने 6 महीने साल भर में इनकी इकोनॉमी का फिर वही हाल होगा, क्योंकि एवरीबॉडी सेइंग कि ये $7 बिलियन लेकर भी कहीं रुकना तो है नहीं, राइट. सऊदी ने तुमको चिकन बेचने की दुकान दे दी, वो एलिट्स का काम है पाकिस्तान का, वही खर्चेंगे वही कहेंगे, यू नो इट्स नॉट गोना हेल्प गरीब आदमी. तो वो इन्वेस्टमेंट इज नॉट मच. अच्छा, सऊदीज और इनके कहने पर इन्होंने एलएनजी कॉन्ट्रैक्ट भी रोक दिया चाइनीज का. तो दैट इज आल्सो द चाइनीज आर वाचिंग दैट कि ये क्या कर रहे हैं. नाउ द अमेरिकन्स आर सेइंग कि गिव अस द माइंस. ऑलरेडी एक तो मैनेज कर ही रहे हैं जिसमें वो सऊदीज आर ट्राइंग टू बाय अ स्टेक. सो चाइनीज आर वेरी नर्वस कि ये माइन ले लेंगे तो सियादिक माइन का क्या होगा, वो तो कॉपर माइन तो हमारी है, और वहां फुटहोल्ड जमाएंगे तो बाकी माइंस में घुसेंगे. तो फिर जो बड़ी गेम है वो सबमरीन केबल गेम है, SWB-6 की गेम है. दैट्स अ वेरी बिग गेम. वो लास्ट टाइम तो चाइना को उसमें वाज वेरी अपसेट क्योंकि उसको विड्रॉ करना पड़ गया. अब 2 चाइनीज कंपनी अभी भी यूएस के साथ मिलकर उसमें दे आर अ पार्टनर इनटू दैट. सो दैट इज अ वेरी वेरी बिग टिकट गेम फॉर चाइनीज. दे वांट टू प्ले दैट गेम. सो ये जो इन्होंने सॉफ्ट लॉन्च किया था एयरपोर्ट का, दिस वाज जस्ट टू टेल द पाकिस्तानीज दैट वी आर कमिंग, स्टेप बाय स्टेप वी विल कम इन एंड वी विल टेक इट ओवर. अब पाकिस्तानियों के साथ प्रॉब्लम यह है कि कितनी देर तक वो चाइनीज को बचा पाएंगे पाकिस्तान में. फॉर हाउ लॉन्ग विल दे बी एबल टू प्रोटेक्ट देयर मेन इन पाकिस्तान, क्योंकि द मूड इज वेरी एंटी चाइनीज, एक्सट्रीमली एंटी चाइनीज एंड एक्सट्रीमली एंटी अमेरिकन ऑल्सो. अच्छा, इसमें एक चीज आप देखो, जो पाकिस्तानी मेनलैंड है, दे आर एंटी अमेरिका लाइक एनीथिंग. हाँ, वो जितनी आप लात मारो ना अमेरिका को उतनी वो बेवकूफी करता है. दैट्स व्हाई आई एम हाँ सो हैप्पी कि हमारे इंडिया के अंदर एंटी अमेरिकनिज्म आ रहा है, क्योंकि अमेरिका को जितनी लात मारो ना उतना वो तुम्हारे पास आता है. नहीं 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 नहीं. You know, हाँ नहीं, they अब keep क्योंकि saying, पाकिस्तानी पंजाबी इज वेरी एंटी अमेरिकन, एक्सट्रीमली हाँ, एंटी अमेरिकन, वो सेंटिमेंट है, राइट. बट the Baloch and the KP people are not anti. The KP to some extent because of what they saw, वो उसको पाकिस्तान पे ज्यादा ब्लेम करते हैं, अमेरिका पे कम करते हैं. बट बलोच आर नॉट एंटी अमेरिकन. दूसरा, बलोच भी प्रो अमेरिकन, बिकॉज बलोच को काफी पैसे पूसे जो आ रहे हैं अभी, जितने भी पैसे आ रहे हैं उल्टे काम करने के लिए वहां पर, वो तो सारा अमेरिका से ही आ रहे हैं. सारा कुछ अमेरिका से आ रहा है. अमेरिकन आर सपोर्टिंग देम A to Z. दूसरा, चाइनीज करेंगे क्या इनको अगर ये मिडिल ईस्ट में नहीं आते हैं, राइट. इफ वी सी व्हाट इज हैपनिंग इन रेस्ट ऑफ मिडिल ईस्ट, इफ बिकॉज दिस वॉर इज गोइंग टू एक्सपैंड इन मिडिल ईस्ट, ये रुकेगी तो नहीं, और ये बड़ी हाई स्टेक्स बनने वाली है वहां पर भी. चाइनीज का पत्ता मिडल ईस्ट से बहुत बुरी तरह कट चुका है. देयर इज जस्ट नो क्वेश्चन अबाउट इट. ठीक है, पता कट. कैन यू हियर मी? Yeah, I can hear you. परफेक्ट. आई जस्ट रीफिक्स्ड माय माइक, थोड़ा सा गड़बड़ दे रहा था वो. बट नहीं केस, चाइनीज का पत्ता बड़ा जोर से कट चुका है वहां पर मिडिल ईस्ट में, बिकॉज नोबडी इज काइंड ऑफ आस्किंग फॉर हिम. दैट जो एक चाइनीज का होल्ड होता था, वेयर इरानियंस वर काइंड ऑफ प्रो चाइना, एंड चाइना को लेके आए टू डू दैट डील बिटवीन व्हाट यू कॉल ईरान एंड सऊदी अरेबिया. आज वो होल्ड नहीं है, बिकॉज यू नो वो इजराइल भी वहां पर अभी No, because वो होल्ड इसलिए नहीं है. देखो, ईरान से जहां तक आप देखोगे, द चाइनीज बाय 90% ऑफ इरानियन ऑयल. yeah, of ठीक whatever है, they send. of whatever they sell, 90% of Iranian oil goes to China. So Iran is to China in Middle East what Pakistan is to America in South Asia. That is what the Chinese want. Achha, Chinese have only done one very smart thing. They have not invested too much into China, into Iran. Their total investment is around $131 million in Iran. I mean, I'm quite surprised जितने अफगानों ने अपने आप को
प्रोजेक्ट किया था एज द स्मार्ट दिस थिंग, द वे दैट दे आर लेटिंग चाइनीज इनसाइड, इनको ये नहीं पता चल रहा अफगानों को लूट के ले जाएंगे ये। ठीक है, अफगान आर See, स्ट्रॉन्ग पीपल बट दे आर सिंपल पीपल, दे विल लूट ऑल द अफगान, और वो ऑलरेडी शुरू हो चुका होगा, देयर इज नो क्वेश्चन। वन फाइन डे दैट डे विल कम दैट द वन चाइनीज विल गेट किल्ड, and you know the shit will hit the fan in Afghanistan after that. hmm. See, So Afghans are negotiating very smartly with the Chinese. Also, they're keeping them away. Smartly negotiating with them also, and they're negotiating with Americans also. Afghans are not committing to either side of आज की date में. हाँ, Because Afghan knows that the Americans are playing a dirty game of this ISKP against Iran, and it is going to hit the Afghan border as well. So Afghans are hedging their bets very carefully. Now, they do have deals with Russia, they do have deals with China, but then what do you do? If you don't diplomatically accept any country, what option does Afghanistan has? If China wants to, or Russia wants to, then obviously they have the first mover advantage in the region. This is what the Americans don't understand. The Americans keep on sending them $40 million cash every week. 87 That is 70, 87 हो गया, 72 था. 87 sir, 43 goes to Kandahar and 44 goes to Kabul. Haqqani. So if they are sending that kind of money, they don't understand that, it's not going to work. Only the money is not going to work. Because Afghans are looking at the long game. Afghan तो ये भी बोल रहे थे ना, हमको एससीओ में भी बिठाओ तो ब्रिक्स में भी बिठाओ. They are looking for their own recognition. हमको भी बिठाओ, क्यों नहीं बिठाओगे? That's No, not going to होगा happen. नहीं. That is not going to happen. But the way Russians and the Chinese are trying to lure Afghans into their fold, you have to be careful, because don't forget this leftist Sino-Wahhabi जो pact है, उसको देखना पड़ेगा. Right? You have to be careful of that lobby also. Yeah. But the Saudis का बड़ा clear है. Why didn't that happen is because the Saudis smelled rat with the Chinese. The Saudis said that you are, on one side you want us to be good friends with Iran, on the other side you are funding them against us only. And the All worst this part is, Hezbollah. if you notice, even in the BRICS, India and Brazil has given a bloody middle finger to what do you call, Belt and Road. Obviously, the Belt and Road we can never accept. The day we accept Belt and Road, we are in trouble, यार. Belt and Road हम तो accept नहीं कर सकते ना. So देखो, तभी मैं कह रहा हूँ कि ब्रिक्स की जो formation है, no matter it's a good platform, but it has huge fault lines with it. When it comes to India, structure नहीं मैं वही बनाया. कह रहा हूँ. When it comes to India and China, चिट्ठी लिखनी है ब्रिक्स में, dear President of BRICS, dear BRICS headquarters, here is my suggestion. Where do you write to? Nowhere. You send it to every country who's heading it for that year. That's how it works. I had this discussion. As a matter of fact, I said this in a discussion in JD also. कि साहब ब्रिक्स का स्ट्रक्चर कहाँ है? हाँ, तो ब्रिक्स का स्ट्रक्चर नहीं है. ब्रिक्स इज टू प्रीमेच्योर अभी. और ब्रिक्स का सबसे बड़ी फॉल्ट लाइन इज द इंडिया एंड चाइना रिलेशनशिप्स. राइट, वो सबसे बड़ा फॉल्ट लाइन. So we have to be very careful with BRICS, but I think we are doing a wonderful job. I mean, we are hedging our bets both ways. It's good because we are getting what we want. So जहाँ हमारा interest है वहाँ हम करेंगे, जहाँ compete कर रहे हैं वहाँ हम compete करेंगे. Right? It's very simple. How far that takes us and where it takes us is fine. Doesn't matter. But for now, it's serving a good interest. Right? It's serving us well. We are the largest exporter of oil to Europe, which is not a joke. So see, it's working. No, somewhere it's working. The foreign diplomacy is working. We are reaching where we never dreamt of reaching before. We have to. These are good things. So we are leveraging. We're looking at the win-win situation rather than a win-lose situation, I would say. So an apt application of game theory in conflict, where you look at win-win and you don't forget how win-lose, right? So now the game is going to be in Pakistan. The Chinese are extremely worried about Taiwan. They want to take Taiwan, but if they take Taiwan, then what do they do? Then they lose this side. Okay, they will get stretched there. The Americans are not going to give them Taiwan. Yeah. It's not going to happen. Yeah.
unless they reach a deal and they say, okay, you take Taiwan and then you let the Balochistan go. Which I don't think No, will happen. it doesn't Okay, balance because it yeah, doesn't balance because the way America is behaving in Chinese neighborhood and the way Bangladesh and Myanmar is going to prop up in next 3-4 years and the way it's going to behave, I don't think it is going to happen. yeah. Ulta It ye ho doesn't match. jayega. The only thing I see is that if Trump comes, the only thing which will happen is jo America ki wo fixation hai that Russia is the number one enemy. Maybe Trump will train his guns towards China and say Russia is not the enemy, China is there. So there will be marked escalation can happen. That's the only thing I can see happening if Trump comes to power. We don't know if he will come to power. I really doubt. So that is where this whole story is stuck right now. I want Kamala But Harris to come to power so that, I can sit with a bloody box of popcorn and watch America fall. yeah, America is like it's to fall also. It will take a lot of time to fall. But you know what? Once this, I don't want Kamala to come because if America falls, they're going to bring the world down with them. It's not going to be a very pretty situation, So, So I'm I'm not going to very cover sure. this in a small little update tomorrow. किस तरह से अमेरिका दुनिया में आग लगा रहा है, ठीक है? तो ये मैं कवर करूंगा. And Trump will come. There's going to be chaos in America. Let me just say that very clearly. The amount of Shaheen Doesn't Bags, matter. जितने तो Shaheen ठीक Bag है. खुलेंगे ना वहां पर, it's not funny. That is Farmer good से for us. Shaheen Bag, oh. That is बहुत good for मजा. us. Yeah. Wow, that is good for us. That is something which is more acceptable to me rather than Kamala coming and lighting fires and doing Shine Bag in India, in Delhi. I would rather let her do Shine Bag in Los Angeles. I don't mind. Yeah. No, that's a better I'm just story. kind No, of being you're right. rhetorical. Yeah. No, but I you're wanna right. Yeah. Yeah, so it's fine. एक लास्ट में चीज पूछता हूँ आपसे before we get into questions. When you see this whole thing coming out, क्योंकि देखिए एक एंगल हमने अभी तक कवर नहीं करा इस डिस्कशन के अंदर, is that the Baloch are also being supported by the Pashtuns. That is what I'm saying. Oh, they have a tacit Now- alignment because वो autonomy जो है. Now, उसके अंदर अगर आप देखो, now the Baloch are also arming up. ये बड़ा clear है. The amount of weapons that are coming into Balochistan because the last attack that happened in the middle of the night, dead at night. In It a is the place same weapon. घंटे की लाइट नहीं है, तो obviously night vision लगा के लोगों ने अटैक करा है. It is the same weapon what the TTP has. कोई difference नहीं है. Weapon बिल्कुल same है. वो ठीक है, ट्रेनिंग हो चुकी है इनकी. वही मैं कह रहा हूँ ना, तो वहां पर देखो ट्रेनिंग नहीं हो चुकी है. There are TTP fighters who are actually inside BLA and they are carrying out operations. So it's a synergy between two groups, between BLA and TTP, and it's a mix of fighters. It's a mix of guys. So that is what is happening because they are looking at the larger game. तो मेरे को ना प्रोग्राम का टाइटल चेंज करना चाहिए, पाकिस्तान की बन गई खिचड़ी. इनकी बनने वाली है खिचड़ी. How will they survive? I really don't know. मुझे नहीं दिख रहा. The only way they will survive is they will get a martial law and they will prolong what is happening. MARSHALLA. That is how they will survive. ये जो जुडिशरी के साथ भी पंगे कर रहे हैं ना, जो इन्होंने डाइल्यूट किया जुडिशरी को, और जब ये अभी कह रहे हैं कि नेक्स्ट अमेंडमेंट भी शायद आएगी जो म्युनिसिपलिटीज को डाइल्यूट करेगी, पावर्स डाइल्यूट करेगी. मुझे लग रहा है पाकिस्तान मार्शल लॉ ढूंढ रहा है अगले 50 साल के लिए. घंटा यार, जो तुम बड़ी अमेंडमेंट लेके आने वाले थे, व्हाट हैज एक्चुअली कम इज कंप्लीटली डाइल्यूटेड. नहीं, वो अभी डाइल्यूटेड है बिकॉज वो मौलाना ने लाने नहीं दिया ना. मौलाना को पता है कि अगर वो आ जाती तो वो तो आसिम मुनीर वैसे ही हाफिज़ कुरान है, वो बोलता मैं अमीरुल मोमिनीन, बाकी तुम सब बाहर जाओ, जाना मैं तुम. तो द वेरी स्मार्ट, द मौलवीज आर वेरी स्मार्ट. सी द कार्ड्स फजलुर रहमान प्लेड, स्पेशली बैंकिंग को लेकर. आई डोंट नो हाउ nobody is talking about it. How IMF is not talking about it. How ADB is not talking about it. How no bank is talking about it. What will happen to our monies which are invested? What are Chinese going to do with Sharia banking, by the way? How are they going to get the money? Coming in a burqa? Probably. So you have,
So they're changing the nomenclature completely. They're softening it so that soft Taliban. You remember I told you Pakistan will be the soft Taliban. This is the softening of Pakistan towards becoming that Taliban. And the army has realized if we don't do it, the Talibanis will come and do it. So the army is going to be the new Taliban in Pakistan, the soft Taliban, the corrupt Taliban. Awesome. The whiskey Let's get into questions. And कई लोग बोल रहे हैं यार आदि भाई आपने खिचड़ी कहाँ बोल दी? It's going to be बिरयानी. ओ घंटे की बिरयानी भैंस यार पाकिस्तान के पास कुछ नहीं है. नहीं बिरयानी की में बड़ी मजा आता है. लेयर बाय लेयर बड़ा साफ होता है. ये तो बिल्कुल खिचड़ी है मिक्स करके सारा कुछ. वो भी वो नवलखा खिचड़ी पाकिस्तानी बोलते हैं ना एक चीज को. 9 दिन का बचा हुआ खाना मिक्स करके खिचड़ी बनाते हैं. वही है बचा कुचा जो है. People are asking ये बैंकिंग का थोड़ा आप एक्सप्लेन कर दो before we get into questions. Okay, so if you look at the new amendment में ये है that by 1st January 2028 Pakistan में the banking will be as per Islamic Sharia banking. So all conventional banks of Pakistan will be turned into Islamic Sharia banks, and the whole transactions will happen. The interest and everything will be gone. जो Sharia law का है, Islamic law की जो interest है जिसको वो बोलते हैं, वो profit बोलते हैं उसको, वो बहुत कम होता है as compared to normal bank. So अगर normal bank आपको 22% दे रहा है तो वो आपको 10% ही देगा. तो that is what is happening, and they have to change that as per the constitutional amendment. That is what has happened in Pakistan, and nobody is talking about it. तो कहते हैं ना आप बैंक में पैसे रखो तो जो इंटरेस्ट मिलता है वो हराम है. ठीक है. तो प्रॉब्लम क्या होगा? सबसे बड़ी चीज आपको समझ में आनी चाहिए. लोगों ने जो थोड़ा बहुत पैसा रखा हुआ है बैंक में वो भी निकालेंगे. बोल रहे हैं बाढ़ में जाओ यार. क्योंकि इनका वो रिबा का है. रिबा का एक क्लॉज है उसमें इन्होंने चेंज किया है. मैंने उसने बताया भी था. आई टोल्ड यू व्हाट दैट 2A कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट. जस्ट गिव मी अ मोमेंट. आई थिंक आई हैव समवेयर. आर्टिकल 2A. आर्टिकल 2A में जो इन्होंने चेंज किया. So that is like you have to be, your banking has to be in complete compliance with the Islamic Sharia law. So how is Pakistan looking at paying off $110 billion they have to pay, and what are going to be the nitty-gritties of those payments which have to go out? How will they work on it? Till now they were selling their strategic assets, then now they're going to start selling their backside. That's the only other way. Well, they have always been selling their strategic assets. They don't have assets, I'm sorry. So that assets are sold. No, that's what I said. That's already sold. That is already sold. What is going to be sold now? कितना बेचेंगे? वही तो बेच रहे हैं अभी तक. 70 साल बेच तो लिया उसको. Yeah. अब क्या चलो guys, let's get into questions, and more importantly, सबसे मैं request, क्या बात है यार 893 likes. What is this? You guys are being nasty with the likes, or YouTube is being nasty with the likes? बोर हो गए शायद. मैं भी हो गए. बंदे तो काफी सुन रहे हैं और चैट ऐसे चल रही है पता नहीं साला 70 km/h पे. बट लाइक तो लगा दो. ठीक है guys, hit the likes. आज तो there is no sound issue also, so you guys need to double the likes. ठीक है. वैसे इतने अच्छे अच्छे likes लगाते हो आप. Please hit the like button, subscribe to the channel if you've not, and most importantly share this with your friends and families ताकि उनको भी पता चले यार पाकिस्तान अब पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पे आने वाला है. और राजा जी की जो प्रिडिक्शन है ना, किसकी 22 नवंबर की, वो आने वाली है. ठीक है. वो आने वाली है. राइट. तो लेट्स प्लीज फोकस ऑन दैट. 22 नवंबर को अभी 24 दिन बाकी है. तो टिक टिक 24 हैज स्टार्टेड. ठीक है. 22 नवंबर के साथ राजा जी ने, टू बी फेयर, ही हैज सेड प्लस और माइनस 1 वीक बोला हुआ है. तो we will give him that discount. हम 10 दिन का डिस्काउंट दे देते हैं. कोई बात नहीं. Thank you. Very generous of you. नहीं कुछ the way these guys are going, I think 22 November is being too generous. So I think it's going to bloody explode before that. You know, I was surprised yesterday at a press conference, not a press conference, journalist asked Nawaz Sharif in London a question. Said that you were going to Pakistan, you were going to become the Prime Minister of Pakistan. What happened? Do you know what his reply was? यार यूएस जाने से पहले ये सवाल पूछना बहुत जरूरी है क्या? I missed this. That was his answer. Nawaz Sharif saying to the reporter, अमेरिका जाने से पहले ये सवाल पूछना बहुत जरूरी है. Oh, I missed this.
यार कल ट्रैवल कर रहा था, डैम किया। so चल रहा है बैकग्राउंड पे, आई बहुत डोंट कुछ लाइक चल रहा ट्रैवलिंग एनीमोर यार, ये क्या है ये? क्या? ओहो हो, ये तो गड़बड़ हो गई यार, ये तो मिस कर दिया मैंने। है। हाँ, so आई वाज सेविंग बैटरी एंड दैट्स व्हाई आई वाज नॉट ऑन ट्विटर। नहीं, मैंने भी आज देखा, आई सॉ इट ऑन ट्विटर टुडे। और मैंने नोटिफिकेशन मैंने दूसरे न्यूज़ चैनल्स के, न्यूज़ दूसरे सोर्सेज के मैंने सब बंद कर रखे थे, बिकॉज़ यू नो वन सारा के इट बड़ी गोज ऑफ रियली फास्ट व्हेन यू हैव अ 10-12 आवर ट्रैवल ना, सो देन यू आर लिटिल वरीड। दैट इज So ट्रू। yeah. So guys, let's get into questions. But before that, my request to everybody: we are 326,000. Of course, we are back with our regular programming till the time I travel again, which probably is in another 30-40 days. So इतना कोई जल्दी नहीं है. But most importantly, आप इस चैनल की तरफ कंट्रीब्यूट कर सकते हैं QR कोड या फिर पेपैल या फिर सुपर स्टिकर सुपर चैट्स के साथ। लेट्स सी आप लोग कहते क्या है। हाँ, एंड आई और होप आप लोगों की कंप्लेंट जो है ऑफ नॉइज एंड नॉट बीइंग क्लियर हैज बीन सॉर्टेड टुडे, सो yeah, absolutely. आई I think होप 2-3 सो। people commented there also. थैंक यू। यार बैटरी बैंक्स आर गुड, देयर इज नो क्वेश्चन, बट यू नो बैटरी बैंक के बाद भी थोड़ा सा सेफ्टी रखनी पड़ती है व्हेन यू आर, स्पेशली व्हेन यू आर ट्रैवलिंग अलोन एंड दैट लॉन्गर डिस्टेंस। Alright, let's see. Also, we have members who have joined in. Saffron Man and Sanjay Singh ji, thank you so much for becoming members. And yeah, that's it for the members. Let's get into super chats. Srinivas ji, thank you so much. Pranam to both. Why do religious parties fare poor electorally in Pakistan despite fanaticism? Will TLP will be different in the future, or is it a paper tiger? No, it won't be different. See, TLP is concentrated around Karachi. राइट, अगर आप देखोगे कि द ओनली पॉलिटिकल पार्टी विच इज स्ट्रॉन्गर इज द जमात इस्लामी इन पाकिस्तान, JUIF। दूसरा, द आर्मी नेवर लेट्स देम विन द सीट्स। The army makes sure that these extremist parties don't come into power because they are a direct threat to the army. So the Pakistani establishment also plays a lot of games with them and keeps them away from the power. That is why they are not able to come. And there are areas where they come. अगर खैबर पख्तूनख्वा में आप देखोगे, they all इमरान का, the reason they came for PTI was because one, he talked about Pashtun, second, he talked about Madina ke riyas. JUIF ka gad is there, I'd right? add one more thing to what you said, is that the army wants to control Islam. Remember that always. Okay, The ठेकेदारी of Islam is with the army. The moment they give it to the Maulanas of Pakistan, the army is over, and that is where the fight is happening this time. Yeah, they have realized that. So that is why they don't do electorally very well. Okay, Jain Saab, thank you. Chinese are exploiters. How can BLA go with them? In fact, it's better for them to go with the USA, and US will provide more powerful weapons to them. Exactly. Yeah, it is not about. We have discussed. That is what we are talking about. I don't think they will go with the Chinese. They might, they might buy some time for the Chinese, for Chinese to get deployed by saying that we won't do anything after you get deployed, and buy that time before they start again. So they will actually tell Chinese, come in, we will not do anything, and then they will start. But it's gonna happen. It's a slow game. It will happen. Saal lagega, abhi wait karo. Any link to USA axing dollar competitor Enbridge? Firstly, when did this become an operation? When did this become operational for USA to want to stop it, or they are using code Enbridge for UPI? देखिए यार ऐसा है. I keep saying this, and I get a lot of trolls for it. But let me say this again: de-dollarization will happen, but don't think that the US won't bloody go after it. It's come from their own State Department that they have said any competitor to the SWIFT will be considered a national security threat. Let's be very clear. Okay? So please understand, they might have to ditch the dollar after some time, but it's going to be after a lot. It's going to take a lot of time for de-dollarization to happen. It's not on the cards very soon. It's not going to happen, especially till petrodollars are there. It is very, very difficult to de-dollarize, and it's not an easy, slow thing. So it's not going to happen. Thank you. You say, is it possible that Pakistani army also sends terror actors to attack Chinese and pretend they were from BLA, keeping Chinese confused? Yeah. See, Pakistan can do that, but what will Pakistan get out of it? China is not going to give the money, right?
the retaliation will be on the Pakistanis, because what Chinese troops will do, they will open fire in public. वो Yeah. पाकिस्तानियों को मारना शुरू कर देंगे. Hmm. Right? So the Pakistanis, it's not America, na, ki the way they played in Afghanistan, the Chinese will not play the game. Chinese are not going to play the same game Americans were willing to play with Pakistan. True. Javeri ji, thank you so much. He says if Donald Trump becomes the POTUS, then what game would he play in this battle? Will he be anti-war like in Russia, Ukraine, or will he side with Pakistan? Look, nobody is ready to side with Pakistan. If you read the US State Department's document on Pakistan, there is hardly a mention of Pakistan as a partner or as in terms of any relation. Hardly a mention. Pakistan का कोई mention नहीं है. Right? पाकिस्तान का उतना ही mention है कि जो उनका strategic interest है उसको लेकर पाकिस्तान का mention है. That is what the US State Department documents say. जो उनकी recent foreign policy पे जो उनका आया है. But if, as I said, if Trump comes, he will try to get the Russia-Ukraine war to slow down. That's for sure, right? And he will train his guns towards China like he did last time. So he will antagonize the Chinese more because he would like to do clear business with them. Trump is very business-minded. That's true. Ashish Saab, thank you once again. Americans can deliver for BLA significantly if they discuss with Americans. Any faction of BLA going with China will damage Balochistan only. And he continues to say, thank you once again. For America, it does not help to give money to Pakistan, although IMF is better for them to work with BLA and cause damage to China like the Afghan war. Might I add, Americans have actually learned that the Punjabi Musalman Jarnail is not worth it. He knows it's not worth it. He's the most corrupt general sitting there, so he's not worth it. But look, if you look at within Afghan also, Afghan war ke time pe bhi agar aap dekhoge, there are groups which splinter towards one side or another side. ANDSF was on the other side for a very long time, right? So it doesn't matter even if some goes. It might not damage the Balochistan. And, honestly speaking, I don't think the Chinese or the Americans are too worried about the Balochs. They're more worried about their own interest than the interest of the Baloch. Let me be very, very clear on this. So even if the Baloch want to play both sides and they want to hedge their bets both sides, I mean, it's their call what they want to do with it. But yes, it will damage them. It will definitely damage them. True. Rothwit Saab, thank you. He says Pakistan fate US election. It's a pony with no tricks. Biden apologized to natives, Anglican Catholics, try scare the Amish vote to vote Trump. Elon is going bankrupt. He will go bankrupt if this guy loses, Trump loses. Trust me, Elon will run from that country so fast our heads will spin. Yeah, that will happen. But look, let's see what happens, because when you are part of a system, and even if you're campaigning for one thing I've learned with watching these American businessmen is that they know how to have their exit plans as well. And given the way Elon is, he will definitely have his own exit plans. He's not going to lay his eggs all in one basket. So they have their funny ways of coming back and doing what they want to do. But yes, the new regime will be very antagonistic towards him, and he will maybe become the new crusader of fixing things. I would actually be happy if Elon Musk goes ahead and buys New York Times. I wouldn't be surprised if he does that. यार आज जेफ बेजोस ने तो उड़ा दिया है. You know what he did, right? I know. I read the piece, but let's see. See, with Americans. After that, the top end of Washington Post just left. हाँ, तो they left. तो अब देखते हैं ना what to talk. Let's see. Jain Saab says, thank you. Afghan, American or Russian, Chinese will make a fool out of all three and attack any of them if they try to act smart. Afghans are not stupid. They aren't, but they have factions. They have factions. They have their own fault lines. They have their own interests. There is a lot which is within Afghanistan. Also, a lot is happening. The Pakistanis are trying to exploit that. They try to portray Haqqani as a very liberated guy. The Americans are already hedging their bets. There's a lot happening in Afghanistan, trust me. Power is a very dirty game, so it's not black and white. It's a lot of gray. Establishment let this happen? The Pakistani establishment, no, but what choice do they have? क्या करेंगे वो?
They are corrupt. They have sold themselves to the Americans. They have sold their souls to the Chinese. Right? They have to pay back. What is the establishment going to do? It's not a sovereign establishment. It's a highly compromised, corrupt establishment. They don't do anything, or they try to stop it from one country or another country from serving their interests. They will be pulled down, and somebody favorable will be heading it. We have seen what happened with Imran. They know how to play, pull plugs in Pakistan. Everybody is compromised in Pakistan. MPC Saab, thank you. Sir, do you think Pakistani military establishment won't use every extreme measure in its disposal for survival? Also, subverted populace is easy to fool. See, that is what I'm saying. They aren't subverted anymore. You got to understand that. They are not subverted. Second, I'm telling you that the Pakistanis know that, their establishment knows that their future is becoming Amir Momin and not the Jarnal of Pakistan. They're smart. They're adopting to the game. They know what they're doing. That's true. Raja sir, is Gurez Valley safe for camping? Yes, but now it is not. It's come winters. It might snow anytime. Next year you can go there and camp out there. It'll be lovely. During summertime it's beautiful. भाई जमना है तो चले जाओ, कोई टेंशन नहीं है. नहीं, अभी तो जाने का फायदा नहीं है. जाने देंगे भी नहीं, कैंप नहीं करने देंगे. वहां बर्फ पड़ गई तो 6 महीने वहीं रह जाओगे, तो उस तरीके से चले जाओ, कोई बात नहीं. फिर BSF का हेलीकॉप्टर अगर निकालेगा तो निकाल देगा. Yuyutsu साहब कहते हैं, yesterday Raja Muneeb साहब exposed a घातक account in misleading post of hoisting. Yeah, that guy घातक operator, right? Whatever is this thing, that guy has been caught too many times. यार देखो, there are a lot of faucet accounts जिनका काम होता है सिर्फ फेक न्यूज चलाना. ये किसी के सगे नहीं है, ये सिर्फ अपने सगे. इनको लाइक्स चाहिए, एंगेजमेंट फार्मिंग चाहिए और पैसे चाहिए. और पैसों के चक्कर में किसी को भी मलाइन करेंगे और किसी का भी कुछ भी किसी के बारे में बोल देंगे. कोई भी फेक न्यूज चलाते हैं. इनमें सबसे टॉक्सिक है. हाँ, जब इनको फिर काउंटर करो तो ये पहले दांत दिखाते हैं, जब डरो नहीं तो ये भाग जाते हैं. इनमें सबसे टॉक्सिक है बाबा बनारसी. जितनी फेक न्यूज वो चलाता है उतनी कोई नहीं चलाता. I don't know how our जनता follows these people blindly and does this. Well, anyway, it's your choice. Shreya Saab says, why will CIA hate its own indirect assets in Pakistan if this is happening? No, why are they hitting their own assets? They're not hitting their own assets. Their assets will do their work till they are there. And they are not assets. See, in assets also there are two things. One are real assets and one are source assets. The Pakistani whole relationship with America has become a source relationship. The asset relationship has become over. But whatever assets they have, they protect them, and their assets will be working for the Americans. They would not compromise them there. That's true. Rajesh Saab says, Aadi and Rajaji, who's better US or China in Pakistan? One is Bania, another is Gunda. You know that Bania is worried about his money, but Gunda will give free money but squeeze then and throw. Trust you me, both won't survive there. Look, none of them are better, but if you ask me to pick a lesser evil there, I would say let it go to the US. They will keep it more messy than the Chinese. Yeah. Yeah. Pakistan has a huge discovery of onshore gas reserves. I have a London bridge to sell. Would you like to buy it? Osho Saab, thank you. Jalebi party for both. Pakistan bid got rejected. Bid for? Bid for what? BRICS. They didn't even apply. Yeah. They didn't even apply. They didn't even send a foreign representative. It was, देखो यार, पाकिस्तानी यूट्यूबर्स बेचारों को कुछ चाहिए बेचने के लिए. पहले उन्होंने क्या ये भारत में लोग बोलते हैं, ये पाकिस्तान में नहीं बोलते. मैं बता, ये भारत से शुरू हुआ नैरेटिव. ये नहीं, भारत से नहीं हुआ. ये पाकिस्तानी यूट्यूबर्स ने शुरू किया. पाकिस्तानी यूट्यूबर्स ने पहले बोला क्रिकेट चैंपियंस ट्रॉफी होगी, ठीक है. उस पे एमईए का स्टेटमेंट आ गया. हमारे भी तो थे क्या, जो हंडिया खा के आए. वो तो कॉम्प्लीमेंट करते हैं ना उनको. तो वही मैं कह रहा हूँ. सो ये जो हमारा ये है हमारे तमाशा वाले. सो देन पाकिस्तानी स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट फॉर नेक्स्ट 4 days कि हाउ इंडिया विल हेल्प देम गेट इनटू ब्रिक्स. यहाँ पर सॉरी, then the Indian started. There are people who've been saying this for 6-8 months in India. Oh, okay. ये मुझे नहीं पता. And I've been kind of holding my head and saying, what's wrong with you, man? You don't sit with a terrorist country. But ठीक है, वो उनको, और वो एक्चुअली पहले 6 महीने पहले क्यों बोल रहे होंगे. उनको लगा होगा कि हमको वीजा मिलेगा, हम कबाब खा कर आएंगे. So that's okay.
Doesn't Bharat matter. Saab, thank you. What will happen to Bangladesh if Trump wins? What will happen to Bangladesh? The Bangladesh game has begun. Even if Trump wins, nothing major change will happen. It will still be the same. In fact, things might get a bit accelerated because he would like to needle Chinese a bit more. Osho Saab, thank you once again. Back channel trade talks are on. Kiran Rijiju met. Kiran Rijiju is a minority affairs minister. What will he do with trade talks? Point one. Point two, please read Kiran the Rijiju, official data, Kiran which Rijiju, clearly says your imports from Pakistan for the first time in history has gone to 0. No, but Kiran Rijiju met because of that thing, यार. वो Kartarpur. Kartarpur corridor के लिए what mandate Kiran Rijiju has on trade? No, none, zero, zilch. And Pakistanis are buying from us, but that through Dubai or double the cost, huh? Double पैसा देते हैं हमको, फिर लेते हैं हमसे. All right. Sarvani ji says it seems Iran is going to have its nukes. What will happen if, in case Iran loses its nukes and Saudi gets the nukes? They are demanding. Both get See, nukes. What will be the this situation then? not a very happy situation. I swear that's a nightmare situation we are talking about. The Saudis are looking for nukes because they believe that the Iranians will get the nukes. There was a time when the Americans were like, let Iran have the nukes and let Saudi not have the nukes. They were more, sympathetic दो तो towards the दोनों को दो. Iranians. दो तो हाँ. दोनों को दो, नहीं तो किसी को दो. I don't think दोनों को भी देना चाहिए. Honestly, Yeah, it's going to be a very nightmare ideally. situation. मैं वही बोल रहा हूँ ना, दो तो दोनों को दो. हाँ नहीं, I would say जिसके पास है उससे उसको ठोको और उससे ले लो, उसको दो मत, किसी को मत दो. Nukes in that region, trust me, are very very bad, extremely bad situation. No, big no. Shankar Sahib, please write to us. Your articles can start going up. Raja ji has the website ready. ठीक है, guys, I will announce it properly. Probably Sunday को हम लोग हाँ. announce करेंगे. कहीं ना कहीं अभी काम चल रहा है. Just on the final Sunday phases. Monday तक हम कर देंगे. You can start your articles and he sent me some stuff. आप भेजो उसको थोड़ा update करके. We will figure it out. Rajiv Saab, what happened to the meeting organized by India-Myanmar war groups? Any feedbacks? It's on the 4th of November, sir. Not now. अभी time है. It's after Shaheen Diwali. Afghanji, Kabul is controlled by Habayatullah from governor to GDI, police commanders, all are Kandharis. Ask me, we are here. Influence of Haqqanis has been exaggerated. Shine by taken. It's okay. Reality might be different, but we'll take your point. It's okay. Lajwanti ji, what are the possibility of UPI as an alternative payment system for BRICS? It's on the cards. They are talking about it, but it's not going to be that easy to get. Chinese will never agree. The Chinese will have a problem. We will have a problem. The Russians will have a problem. No, Russians might not have a problem, but the Chinese will never agree. No, even the Russians might start having problems. आगे जाके ना, अभी तो आप देख रहे हो कि अभी तो यही है, but आगे जाके Russians will also start doing drama on this. Yeah. Bharat Saab, thank you. What will happen to Pakistani YouTubers if Pakistan breaks? They'll go to Dubai. They are already in Dubai. They are sitting in Pakistan. If they break, they will become, they will become Islamic YouTubers. They will praise Afghanistan and they will praise the Mujahideens. They will say how bad Pakistani Fauj was. So I'm telling you, one day Hamid Mir will be sitting in a studio saying that what happened to Pakistan, they deserved it. Because the establishment is like that. Lipstick, nail polish, jihad will start facing Pakistani mullahs. I can see Hamid Mir's future. Hamid Mir is going to be sitting in a TV studio and explaining how corrupt the Pakistani establishment was and how they have got Nizam-e-Mustafa and how happy he is with that turban on his head. I can already see his future. That is what will happen. Jain Saab, thank you. What will happen? What will be the end game of Chinese in Pakistan? How long can Chinese sustain the Pakistani drama, or they're waiting for their own economy to collapse? देखो, Chinese end game इतनी जल्दी नहीं निकलने वाली. There is no end game which is going to happen. It is going to be a long game. It is just getting started. And the start is going to happen from Balochistan. That is where the game will start. Chinese are not doing well with their economy. But then, Chinese economy is not in a very bad position also that it's going to collapse completely and China is going to collapse. It's not going to happen that way also. So the game is beginning. Let's just watch how it unfolds.
वो कहते हैं ना, वो पहले जो ओवर्स होते हैं T20 के, जिसको हम पावर प्ले कहते हैं, सो पावर प्ले शुरू होने दो एंड विल नो हु इज स्विंगिंग व्हिच साइड एंड व्हाट इज हैपनिंग. And last one, Nikhil Saab says analysis on Kamla comes to power. Yeah, I will do this. It's a good suggestion. I will get this done. All right. It will be a good. Thank you so much, Radha Saab. There are loads of God bless more you. questions, but we will be sitting here till the rest of the night answering them. Thank If you you so want much. to take 1-2 more, no problem. If you want to take 1-2 more which you think are important, we can take. Yeah, a lot of people are saying video quality is excellent. The audio quality is excellent. So Thank you. Finally congrats for that. we I think found it was sticking. The Bluetooth and this thing was sticking together. I think that was the case. I think that was the case. Yeah. See, sometimes the latest technology doesn't work. The old one I know. does. We need to. My earlier question was regarding how Pakistani is saying that the unknown gunman is foreign powers. USA is a foreign power too now. So if they're hinting it that way or something, then my question followed. Yeah, well. Yeah, so that is what the question is. The Pakistanis have already conveyed to the Chinese that it's the Americans who are behind what is happening to Chinese in Balochistan. That is what I have said. That they're saying it's India and America together doing what they are doing. Ra और CIA जो है वो मिल गई है. That is On what that, I say. sir, thank you so much. It's always a pleasure talking to you. Thank you, sir. Happy Diwali in advance to you, to all our viewers. Thank you so much. Absolutely. And we shall be catching up on Sunday. Sunday is what day? Sunday, I think, is second. Second will be, yeah, Sunday 2nd. So that'll be after Diwali. So yeah, happy Diwali to you, sir, as well. Thank you. Advance. Right? Same to you in advance. Guys, जरा जाने से पहले लाइक ठोको जोर से. मिलेंगे कल फिर से. And please drop a message. Jai Hind, Jai Bharat. Jai Hind, bhai. Jai Bharat.